Hello, 6th standard, and welcome to English class. Today we are going to start with Unit 5 from your English Semester 2 textbook. And the title of the unit is We Can Invent. What is the meaning of invent? Invention. What is the meaning of invention? Invention क्या होता है? कोई न्यू चीज इन्वेंट करना, मतलब कोई भी न्यू चीज जो है उसको मतलब इन्वेंट अगर हम करते हैं, that is called as invention. It is creating something totally new. अपनी आइडिया से, अपनी डेवलपमेंट से कोई न्यू चीज बनाना जो पहले कभी भी बनी नहीं है. ठीक है, तो नाउ वी कैन ऑल्सो इन्वेंट. हम भी कोई न्यू चीज बना सकते हैं. आप लोगों की स्कूल में जो है, अपनी स्कूल में साइंस का जब एग्जीबिशन होता है तो बहुत सारे बच्चे अपनी आइडिया से कुछ नई नई चीज इन्वेंट करते हैं, है ना. बनाते हो ना, या कोई चीज बनाते हो, वो इन्वेंशन है कि डिस्कवरी है, क्या है वो हम आगे अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, जैसे एक होता है इन्वेंशन जो अभी हमने बताया कि वो क्या होता है, कोई न्यू चीज, टोटली न्यू चीज कोई अपनी आइडिया से बनाना, अपनी आइडिया से, अपने डेवलपमेंट से कोई न्यू चीज बनाना, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेंशन. Where there is another word which is called as discovery. Right? Usually, children they get confused between discovery and invention. The invention तो जो अभी हमने बोला, I told you कि कोई न्यू चीज बनाना अपनी आइडिया से, that is called as invention. तो discovery क्या होता है? Discovery is something जो already कोई चीज exist कर रही है, लेकिन आपने उसको recognize किया है for the first time. जैसे for example कि अगर हम बोलें जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस, राइट. क्रिस्टोफर कोलंबस ने बोलते हैं कि अमेरिका डिस्कवर किया था, तो उन्होंने अमेरिका इन्वेंट नहीं किया था, अमेरिका अपने आइडिया से बनाया नहीं था, अमेरिका डिस्कवर किया था. दैट मीन्स ही फाउंड आउट द वे टू अमेरिका. वो वे वाज ऑलरेडी देयर, वो रोड वाज ऑलरेडी देयर, राइट, बट ही डिस्कवर्ड द वे टू अमेरिका. ही डिस्कवर्ड अमेरिका. ये अमेरिका तो ऑलरेडी था ही, लेकिन ही डिस्कवर, तो ऑलरेडी कोई चीज है, ऑलरेडी इट इज एग्जिस्टिंग, it is already existing, and then what do? Is something, one minute, okay, something which already exists for the first time, but हम लोगों ने अभी तक उसके बारे में फाइंड आउट नहीं किया है, और अब जब हम फाइंड करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्कवरी. ठीक है, और इन्वेंशन इज समथिंग विच इज न्यू, मतलब अपनी आइडिया से आपने कुछ नया इन्वेंट किया है. Okay, so this is the difference between discovery and invention. Okay, now let us move towards the unit 5, we can invent. Activity 1, Dr. Invention. Now let us see now what is Dr. Invention has invented. Dr. Invention invented a light that helps people to see in the dark. He also invented a merry-go-round that spins around and round in the park. Dr. Invention ने क्या किया है? लाइट इन्वेंट की है, और वो लाइट क्या करती है? डार्कनेस हटाती है. ये ऑल ऑफ अस नो दैट. He also invented merry-go-round. पार्क में हमने देखा है ना merry-go-round, झूला merry-go-round जो घूमता रहता है राउंड एंड राउंड इन द पार्क. He found a new way to catch fish in the bay. और उन्होंने एक और नया चीज इन्वेंट किया कि फिश को कैसे कैच किया जाए इन द बे. बे मतलब सी में या कोई भी वाटर बॉडी में फिश को कैसे पकड़ा जाए, हाउ टू कैच फिश, बट टाइंग अ हुक ऑन टू अ स्ट्रिंग. मतलब एक पूरी स्ट्रिंग ली है और उसमें हुक जो है वो बना दिया है, एंड उससे हम जो है फिश पकड़ सकते हैं. He thought it was nice when he built a device that lets you record when you sing. अब ही कौन है यहाँ पर? डॉक्टर इन्वेंशन जो है, उन्होंने जब ये डिवाइस बनाया तो उनको लगा ये बहुत अच्छा डिवाइस उन्होंने बनाया है, राइट. Dr. Invention has many ideas. He writes them all down in his books. He plans to invent a triangular tent as well as an oven that cooks. अब यहाँ
पर डॉक्टर इन्वेंशन जो है उनको बहुत सारे आइडियाज हैं. ऑब्वियसली इन्वेंट करना है तो हमारे पास आइडियाज होनी चाहिए, देन ओनली वी कैन इन्वेंट. And what does he do? He just writes all his ideas in the book. And he's also planning to invent a triangular tent. He is also planning to invent an oven that cooks. His soda machine is a scientist's dream. He's planning to invent a soda machine. And his candles are strawberry scented. He's also trying and planning कि वो कैंडल स्ट्रॉबेरी की जो सेंट की जो कैंडल्स होती हैं वो वाली भी वो इन्वेंट करे. I hate to inform him, but I have to warn him that these things were already invented. अब यहाँ पर जो poet जो है, he's saying that I hate to inform him. That means he's saying that he wants to inform Dr. Invention. What does he want to inform him? That he has to warn him and also inform him that these are not the invention. Why these are not the inventions? Why these are not the inventions? He is feeling it. Dr. Invention is feeling that these are the inventions, but these are not the inventions. Why? Because these things are already made. These things are already invented. तो जब भी कोई भी चीज इन्वेंट हो चुकी होती है और हम उसके बारे में बता रहे होते हैं, दैट इज नॉट एन इन्वेंशन, दैट इज अ डिस्कवरी, राइट? सो here he is trying to, the poet is trying to say that I want to warn Dr. Invention that these things are already invented. Of course, we are already using the oven, we are also using triangular tents, we also know about, and we have seen soda machines, right? We have also seen the candles, strawberry scented candles, right? So these things are not invented, these things are already there, right? So this is what the poet is saying. Okay, so this is a poem in your textbook. Now let us move towards activity 2. Now this activity 2, again, this is very simple. Now this poem what we read in activity 1, that poem you have to say it loud with claps and along with the beat of the poem. मतलब आपको उस poem की music बनानी है, right? And stress the words that falls on the claps. Notice that some words must be said faster than the others to give the poem the right rhythm. If the rhythm is right, the rhymes will be clear. The lines below show you where to clap on the first verse. This is the line they have shown. Dr. Invention invented a light that helps people see in the dark. He also invented a merry-go-round that spins round and round in the park. राइट? सो ये जो पोएम है, आपको जो ये लाइंस जो है, जो एक्टिविटी 1 में हमने जो पोएम पढ़ी, वो आपको क्लैप्स के साथ, रिदम के साथ ये पोएम आपको सिंग करनी है. ओके, दिस यूनिट इज एक्चुअली वेरी सिंपल, easy. Activity 3, read the poem again. What did Dr. Invention invent? Okay, now read the definition of invent. What did we, I told you what is the meaning of the invention. What is the definition of invent? Invent is a verb. Invent क्या है? एक verb है, because invent कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, that means it is a verb, doing word है ना? Invent का मतलब होता है to make something, to design something, or to think of a new type of a thing to make something. Okay, जैसे for example, Alexander Graham Bell invented the telephone in 1876. राइट? पहले जो लैंडलाइन फोन्स जो होते थे ना, यू कैन सी इन द पिक्चर, पहले का फोन ऐसा होता था. नाउ वी हैव मोबाइल्स एंड ऑल. many of you must have not even seen the landline phones, and many of you even don't even know how to use landline phones because you are used to using the mobile phones. So who was the one who invented telephone? Alexander Graham Bell, right? He invented telephone in 1876. The telephone is an example of an invention. Alexander Graham Bell was an inventor in 1876. When Alexander Graham Bell invented the telephone, no telephones existed in the world, right? तो ये हम बोल सकते हैं कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट किया. उन्होंने अपनी आइडिया से जो टेलीफोन बनाया, he made the design and he made that thing. Why?
why will we say that Alexander Graham Bell invented? Because उससे पहले टेलीफोन वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते थे. He was the first man, first person who invented. So that is why वो चीज हम invention बोल सकते हैं, right? कि टेलीफोन जो था, it was an invention made by Alexander Graham Bell. लेकिन अगर टेलीफोन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता वर्ल्ड में और फिर ग्राहम बेल ने बनाया होता, वो क्या करेंगे, जो एग्जिस्ट कर रहा है उसमें कुछ चेंजेस लाएंगे. जब उस चीज में हम कुछ चेंजेस लाते हैं और कुछ नई चीज बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ डिस्कवरी. ओके, दैट इज कॉल्ड अ डिस्कवरी. एंड इट इज सेड कि व्हेन वी पिक अप अ फोन एंड व्हेन वी से हेलो, right, वो वर्ड हेलो also Alexander Graham Bell gave us. Why? Because his wife's name was Hello, right? So that started with him, that as he picked up the phone, he used the first word hello. So that is why we all of us say this. And hello was his wife's name. This is what the stories say, right? If Dr. Invention is an inventor working in the world today, why does the poet need to warn Dr. Invention? Why does the poet need to warn? अगर Dr. Invention invent कर रहे हैं, why does the poet need to warn Dr. Invention? क्योंकि जो चीजों के बारे में वो बात कर रहे हैं कि उन्हें इन्वेंट करना है, उनकी आइडिया है, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं वर्ल्ड में. सोडा मशीन, ओवन, मैरी गो राउंड, ये सारी चीजें तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं. तो दैट इज नॉट हिज इन्वेंशन. ओके, सो डू नॉट कंफ्यूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्वेंशन विद द वर्ड डिस्कवरी, जो अभी मैंने बताया. इसीलिए हमें कभी भी इन्वेंशन और डिस्कवरी के बीच में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. इन्वेंशन क्या बताया, something new which is done for the first time. कभी भी पहले वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं होती है और कुछ नई चीज इन्वेंट हुई है, उसको बोलते हैं हम इन्वेंशन. और डिस्कवर क्या होता है, ऑलरेडी कोई चीज वर्ल्ड में एग्जिस्ट है, लेकिन आपने उस चीज को फर्स्ट टाइम फाइंड आउट किया है, right? You have found it for the first time, but it is already existing in the world, right? That is called as discover. जैसे Christopher Columbus, we said, I told you that he discovered America. He discovered America, that means he discovered a new place, right? So it was already there. He only discovered a new place. That is called as discovery. Discover. Again, discover. यहाँ पर देखो क्या बोला है. Discover again क्या है? एक verb है. What does that mean? To find a new place or a thing or the fact that was unknown before. Example, Marie Curie won a Nobel Prize for a discovery of radium and polonium. Marie Curie जो थी, उनको नोबेल प्राइज मिला और उन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी, रेडियम और पोलोनियम. अब रेडियम और पोलोनियम की डिस्कवरी की थी, मतलब ये चीज रेडियम और पोलोनियम ऑलरेडी थे ही वर्ल्ड में, बट शी फाउंड इट फॉर द फर्स्ट टाइम अ न्यू थिंग, राइट? उन्होंने बनाया नहीं था अपनी आइडिया से, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, बट शी फाउंड आउट अबाउट इट. दैट इज व्हाई शी डिस्कवर्ड रेडियम एंड पोलोनियम, जिसके कारण उनको नोबेल प्राइज मिला. Okay, so now I hope you have understood what is the meaning, difference between invention and the discovery, invent or discover. Okay, so these are all again poems base में हमको sing करने हैं, वो सारी चीजें हैं, right? अब डिस्कवर इज समथिंग, एज आई टोल्ड यू, क्या है, कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, बट आप उसको नए फॉर्म में चेंजेस कर सकते हो टू इम्प्रूव. अब जैसे ये पोएम जो फर्स्ट आपकी एक्टिविटी 1 में पोएम है, उसको अगर आप अच्छी तरह से गा सकते हो, अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकते हो उस साउंड को, दैट इज ऑल कॉल्ड एज डिस्कवर. ओके, so I hope you all of us know very clearly what is the meaning of invent and discover. Okay, now in activity 5, let us read this story. We all of us know the story. Actually, we have read the story many times and in our junior class. The crow and the pitcher. Pitcher मतलब here we are talking about the pot, right? देखो, पहले हम लोग इस स्टोरी को हम अपने thirsty crow करके भी जो है उस तरह आपने read किया होगा. One day a crow was very thirsty. For many days there had been no rain. His throat was very dry. He felt weak.
He was too weak to fly. If the crow did not find water soon, he would die of thirst. He felt too weak to fly, but he walked on, looking for water. अब यहाँ पर what is the story about? It's about a crow who was very thirsty, and because it had not rained for so many days, his throat was also very dry. Because he did not find any water, he felt very weak, and because he was weak, he could not even fly, right? And he wanted to drink water. And obviously, we all of us cannot live without water. We can die without water. We can die of thirst, right? And he went around searching for water. He went around searching for water. He was so weak, he could not even fly, but he could not find water. Suddenly, the crow came upon a pitcher on the ground. The pitcher had water in it. The crow put his beak in the pitcher, but the water was too low for him to reach. The crow was very thirsty. Because this thirsty crow, he went around looking for water, right? And suddenly उसने क्या देखा? He saw a picture, एक pot देखा. You can see this picture, right? लंबा सा जो सुरई जिसको बोलते हैं हम हिंदी में picture. He saw on the ground और उस picture में पानी था. तो crow ने क्या किया? He put his beak in the pitcher, but पानी तो था लेकिन बहुत कम पानी था, बहुत ही थोड़ा पानी था. तो उसकी बीक जो है वो पानी तक पहुंच नहीं पा रही थी. The crow was very thirsty. He tried again to reach the water, stretching his beak and neck as back as stretching his beak, neck and back as far as he could. अब क्रो जो है बहुत ट्राई कर रहा था पानी तक पहुंचने के लिए. वो अपनी बीक, नेक, बैक सबको स्ट्रेच करता हुआ, but he could not reach water. He struggled and strained and ruffled his feathers, but he could not reach the water at the bottom of the pitcher. उसने बहुत ट्राई किया, बहुत स्ट्रगल कर रहा था ये वो, बट वो पानी तक पहुंच नहीं पा रहा था क्योंकि उस पिक्चर में सुरई में बहुत ही कम पानी था. Finally he stopped. Crows are smart, and this crow stopped struggling and stepped back to look closely and think calmly. अब because वो पहुंच नहीं पा रहा था तो क्या करे. Crows are usually crows are said to be smart. अब ये crow ने इतना स्ट्रगल किया और देखा कि अरे मुझे पानी तो पीना है, मुझे इतनी प्यास लगी, मैं क्या करूं. So he thought of it calmly. He thought of some idea calmly, मतलब relax होकर शांति से उसने सोचा. The crow noticed many rocks on the ground. He began to put the rocks in the pitcher. Rocks मतलब we are talking about the small pebbles. वो बड़े बड़े रॉक बोल्डर्स की बात नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे से पेबल्स, स्टोन, पत्थर ना. उसने देखे कि ग्राउंड में बहुत छोटे छोटे से जो है पत्थर पड़े हुए हैं. कैन यू सी दिस इन द पिक्चर, राइट? तो पड़े हुए हैं. He began to put the rocks that in the picture. As each rock went, the level of water rose in the picture. अब उसने क्या किया? वो छोटे छोटे रॉक, छोटे छोटे पत्थर जो है वो पिक्चर के अंदर सुरही के अंदर डाले. अब जैसे जैसे वो पिक्चर में वो रॉक्स डालता जा रहा था, पत्थर डालता जा रहा था, the level of water was coming up. After many rocks, the water was finally at the top of the picture. The crow could reach it, and he finally got to drink. And finally, he got the drink he needed. And धीरे धीरे सारे वो पत्थर डाले तो पानी ऊपर आ गया और उसको पानी पीने को मिल गया. The moral of the story is no problem is too big if you take time to think of a solution. अब ये मॉरल हमने बचपन से ही जो है पढ़ा है कि कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है अगर हम ध्यान से सोच समझ के किसी उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालें तो एवरीथिंग हैज सम सलूशन. ओके, जैसे इस क्रो ने सलूशन निकाला पानी पीने की. अब उसी तरह एक्टिविटी 6 में लेट अस सी कि क्या बोल रहे हैं कि स्टोरी का एक पैटर्न क्या है. Many stories follow a pattern like the crow and the picture. Notice the first paragraph of the story starts by describing something that happens so that one day the main character crow has a problem. अब देखो कभी भी हम कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं ना, एक ज्यादातर स्टोरी पर्टिकुलर पैटर्न से जो है लिखी जाती है. जैसे कि कोई फर्स्ट पैराग्राफ अगर स्टोरी का होता है तो फर्स्ट पैराग्राफ ज्यादातर कुछ डिस्क्राइब करता है कि एक दिन ऐसा कुछ हुआ. ज्यादातर वन डे सो एंड
सो एंड सो समथिंग हैपेंड एंड वन डे दिस हैपेंड एंड इस तरह स्टोरी स्टार्ट होती है ना। और वो जो मेन कैरेक्टर होता है, स्टार्टिंग कैसे होती है कि वन डे इस तरह कुछ हुआ और वो मेन कैरेक्टर को फिर क्या होता है, बीच वाले पैराग्राफ में क्या हो जाता है कि मेन कैरेक्टर को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना। जैसे मेन कैरेक्टर के साथ कुछ होता है और वो मेन कैरेक्टर जो होता है वो सेकंड पैराग्राफ में क्या दिखाते हैं, वो जो मेन कैरेक्टर होता है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। और लास्ट वाले पैराग्राफ में जो है वो जो मेन कैरेक्टर होता है वो प्रॉब्लम का सलूशन ले आता है, जैसे क्रो ले आया अपनी प्रॉब्लम का सलूशन। ज्यादातर स्टोरीज इसी पैटर्न से ही स्टार्ट होती है। तो आपको भी क्या करना है, आपको कोई एक स्टोरी लिखनी है। इट इज योर इट इज रिटन वर्क विद योर पार्टनर टू इन्वेंट अ न्यू स्टोरी। अब ये इन्वेंट वर्ड क्यों लिखा है कि जो स्टोरी आप बनाओगे वो पहले कभी बनी हुई नहीं है। आपको आपके थॉट्स से, आपकी आइडियाज से, राइट, आपके व्यूज से एक स्टोरी इन्वेंट करनी है। पैटर्न यही रहेगा। जिस तरह कोई वो कोई कैरेक्टर को ले लो, ठीक है, अब उस कैरेक्टर का कोई प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम जो है वो उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और लास्ट में उस कैरेक्टर ने, मेन कैरेक्टर ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। ठीक है, जैसे यू कैन स्टार्ट वन डे समथिंग हैपेंस टू आवर कैरेक्टर दैट कॉजेज अ प्रॉब्लम। यहाँ पर आप लिख सकते हो कोई भी कैरेक्टर आप ले सकते हो। सेकंड पैराग्राफ में suddenly something happens so the character tries to solve बट इट डजंट वर्क। फिर वो जो जो प्रॉब्लम अगर आया है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। एंड फाइनली द changes so that the character tries again to solve the problem in some unexpected way। दूसरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, सोल्यूशन लेके आ रहे हैं एंड फाइनली उसको सक्सेस मिलती है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता है। इस तरह आपको एक स्टोरी लिखनी है। ओके, so this is like the way you have to write some story. Okay, अब यहाँ पर जैसे देखो, choose one of the invention, study drawing carefully to see how it works। यहाँ पर कोई invention दिखाया, write a description to share how it works and what problems। अब यहाँ पर एक snake walker दिखाया है, then it is ये like dog umbrella है, right। इसमें आपको कुछ आपके keywords लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक्टिविटी 8 में बताया है कि कोई किसी ने बहुत पहले वीडियो गेम बनाई थी। अब उसने वीडियो गेम कैसे बनाई, मतलब खुद की बनाई। जब खुद की कोई नया बनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट, है ना। समथिंग ओरिजिनल फॉर अ चेंज, माय वेरी ओन गेम। आई एम श्योर देयर मस्ट बी प्लेंटी ऑफ अदर पीपल दैट हैव मेड समथिंग सिमिलर टू दिस, बट अंटिल दे कम एंड पुल मी अप ऑन दिस, आई एम प्राउड एंड सोल क्रिएटर ऑफ द पेपर वीडियो गेम। अब यहाँ पर जो एक राइटर है वो बोल रहा है कि मैंने खुद की एक गेम बनाई है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जिन्होंने ऐसा सिमिलर कुछ सोचा है लेकिन अभी तक सिर्फ सोचा है, लेकिन किसी ने भी बनाया तो नहीं है। तो ये राइटर बोल रहा है मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं सोल क्रिएटर हूँ पेपर वीडियो गेम का, है ना। और वो बोलता है ये पेपर वीडियो गेम मैंने 5th 6th स्टैंडर्ड में बनाई थी। और यहाँ पर बताया है कि वीडियो गेम्स वर अ क्रेज इन इंडिया। उस टाइम पे वीडियो गेम्स जो है बहुत क्रेज था, बहुत ज्यादा ट्रेंड में थे, वीडियो गेम्स लोग खेलते थे। तो उसने पेपर वीडियो गेम बनाई थी और यहाँ पर उसने डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस तरह उसने वीडियो गेम बनाई और कैसे। अ पीस ऑफ पेपर, फिर पेंसिल इरेजर, अ फर्टाइल इमेजिनेशन। फर्टाइल इमेजिनेशन इट मीन रॉ इमेजिनेशन, उसकी खुद की इमेजिनेशन से ये पूरा डिस्क्रिप्शन बताया है कि कैसे उसने पेपर को फोल्ड कर कर और क्या कर कर उसने एक वीडियो गेम बनाई है, राइट। ऐसे बहुत सारे आइडियाज, कई बार क्या होता है हमारे पास भी बहुत सारे आइडियाज होते हैं लेकिन वो आइडिया सिर्फ आइडिया तक ही रहते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, राइट। सो आज मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। ये होमवर्क है कि आपकी खुद की आइडिया, कोई भी चीज आपको जो लगता है कि मैं ये कुछ बना सकता हूँ, लेट लेट अस गिव अ ट्राई, यू नो। आप अपनी आइडियाज को इम्प्लीमेंट करो, कुछ बनाओ समथिंग, राइट। सो दिस इज योर होमवर्क, right? With this, we end up